Dear students, today we will discuss the last poem prescribed for you, especially for the students who are appearing +2 council examinations second year for this second year students. Now, it is one of the most important, one of the best poems written by S.W. Longfellow. It is very beautiful poem because it is written in a very simple language. It has so many figures of speech, just like metaphor, simile, etc. And it has a specific stanza form. Each line is written, the first line of each stanza is written in 8 syllables followed by 7 syllabic line. It has a particular rhyme scheme, that is AB, AB, and there are 9 stanzas, altogether 9 stanzas in this poem. Okay, आमे आज जो कविता डिस्कशन करिबा ए सम ऑफ लाइफ, जोरा कि +2 पिला मानकर सेकेंड ईयर पिला मानक पई शेष कविता आ बहुत सुंदर कविता, अति सरल भाषा रे, प्रांजल भाषा रे, विभिन्न अलंकार माध्यम रे उपस्थापना करा जाइछि. एंड इट इज रिटन बाय S.W. लॉन्गफेलो, जे कि 27/2/1807 जन्म होइथिले एवं 24/3/1882 रे मृत्युवरण करथिले. वन ऑफ द फेमस अमेरिकन पोएट्स. ओके, द पोएम इज एंटाइटल्ड ए साम ऑफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साम. साम मीन्स ए हिम, HYMN, hymn. He means stotra, song of praise. That means this poem is written praising life. कविताटी जीवन को प्रशंसा करी, जीवन गुणगान करी, स्तुति करी लिखा जाइछि. Most often we have a negative idea about life. Sometimes we are told life is full of sorrow, life is full of suffering, life is a mire, there is nothing important in life, life is just like a bubble on water. Several things we are told about life. आमको जीवन संपर्क रे बहुत गुड़े नकारात्मक चिंताधारा दी जाइछि. जीवन दुखपूर्ण, दुखर कारण कामना इत्यादि. मनुष्य जीवन पानी फुटका सदृश, विभिन्न कथा आमको कहा जाइछि जहाँद्वारा कि आम भितर से जो नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव सृष्टि होइछि. इन दिस पोएम लॉन्गफेलो refutes, outrightly rejects the traditional idea, the traditional belief, the traditional philosophy. परंपरा अनुसार आम जो भावुचंदी जीवन दुखपूर्ण, मनुष्य जीवन क्षणस्थायी पानी फुटका सदृश, कवि से संपूर्ण भाव में प्रत्याख्यान करछंती. द पोएट इज टोटली एगेंस्ट द ट्रेडिशनल व्यू, एगेंस्ट द फिलोसफर्स, एगेंस्ट द डिफरेंट प्रीस्ट्स, डिफरेंट हर्मिट्स, दोज हु टुक द रॉन्ग इंप्रेशन ऑफ लाइफ, रॉन्ग व्यू ऑफ लाइफ. जो माने जीवन को भिन्न दृष्टि रे, जो मैंने जीवन को दुखपूर्ण बोली भावी संपूर्ण विरुद्धाचरण कर कवि लेखारे ए साम ऑफ लाइफ. ओके, ता माने जीवन रो एक स्तोत्र, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, प्रेजिंग लाइफ. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा. टेल मी नॉट इन मोurnful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. You see, very powerful, very inspirational poem. Okay, and this poem belongs to the tradition carpe diem, that means seize the day.
यही कविता आमे जेते गुड़े सब प्रेरणादायी कविता सब पढ़ी कार्पे डिएम श्रेणीर ये हूँ से कविता भितर गोटे जो थी कि आमे विल गेट इम्पेटस विल गेट इंस्पिरेशन हाउ टू लीड लाइफ आमे जीवन चर्या केमिति करिबा जीवन को केमिति अतिबाहित करिबा आमे एक कविता पढ़िले आमे प्रेरणा पाइबा। कवि कौन कहते टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स मोर्नफुल मीन्स सरोफुल मोर्नफुल सरोफुल माने दुखांतक दुखदायक नंबर्स मीन्स वर्सेस लाइन्स पोएम्स दैट मीन्स द पोएट सेज डोंट राइट sorrowful poems दुखांतक कविता लेख ना दुखांतक कविता लेखी दुख प्रकाश करी कविता लेखी कवि को जनाओ ना डोंट टेल द पोएट राइटिंग sorrowful poems लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम कौन लिखबनी लाइफ इज नथिंग बट एन एम्प्टी ड्रीम लाइफ इज नॉट ए ड्रीम व्हिच सिग्निफाइज नथिंग कवि कहते जीवन एक फांका स्वप्न जीवन किसी नुहे एकमात्र फांका स्वप्न यहीटा लेखिकी कविता लेखना एंड हियर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम is a metaphor and it has a reference to Old Testament of the Bible. बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट रही न्यू टेस्टामेंट रही ओल्ड टेस्टामेंट को यहाँ रेफर कर लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम मेटाफर कौन कंपेयरिंग टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली दीटा भिन्न भिन्न कई क्या भाया देखा जाऊन सामंजस्य नथिबो दीटा भिन्न जिनिस को प्रत्यक्ष भाव में तुलना करने को कहा जाए मेटाफर जमी कहते पद्म पाद पद्म सहित पाद को प्रत्यक्ष भाव में डायरेक्टली कंपेयर करा पद्म पाद जमी मेटाफर हो सिमिलरली लाइफ इज कंपेयर्ड विथ ए ड्रीम द पोएट सेज डोंट टेल मी राइटिंग पोएम्स दैट लाइफ इज नथिंग बट ए ड्रीम तमें कविता माध्यम मत जनाओ ना ये जीवन एक स्वप्न मात्र फॉर द सोल इज डेड देयर स्लम्बर्स व्हेन वी ड्रीम आम केते स्वप्न देखती व्हेन वी स्लम्बर व्हेन वी आर इन स्लीप आम शोइफा समय ही स्वप्न देखती अकॉर्डिंग टू द पोएट द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स यू सी कंट्रास्टिंग थिंग्स ऑपोजिट थिंग्स सोल इज इमोर्टल soul is not subject to death and decay whereas body is subject to death and decay the soul is dead that slumbers our soul never sleeps who sleeps amar आत्मा केते बेले हेले सुए नाही सुए किए मन अवसन्न शरीर को विश्राम देवा पई मन जेतेबेले इनएक्टिव हुए आमे जेतेबेले सुअंती निद्रा नियंती विश्राम नियंती एंड व्हेन वी आर asleep we dream according to the poet life is not a dream and the person who is lethargic who idles away time who sleeps who falls into deep slumber the soul of that person is dead से लोकर आत्मा मरी जाए आत्मा काहरी मरे ना नैनम छिन्नति शस्त्राणी आत्मा एमती गोटे जिनिस जहाँ कौन अस्त्र शस्त्र छिन्न करें ना सेटा नॉट सब्जेक्ट टू डेथ एंड डिके इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल किंतु कवि कौन कहते से लोकर आत्मा मरी जाए जो लोक आलस्य परायण जी कि सब बेले शोई थाए शोईकी स्वप्न देखु थाए दैट मीन्स द लेजी पर्सन्स सफर टू टाइप ऑफ डेथ्स जो मैंने अलसुआ लोक से दुई प्रकार मृत्यु हुए गोटे हूँ फिजिकल डेथ एंड द सेकेंड वन इज स्पिरिचुअल डेथ फॉर द सोल इज डेड देयर स्लम्बर्स एंड द थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम व्हाट ए थिंग अपीयर्स आउटवर्डली
गोटे जिनिस बाहर को जहाँ जना पड़े आम गोटे जानी प्रोफ जानते ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जहाँ सब चकचक करे सुना नुहे अर्थात द इंटेरियर एंड द एक्सटेरियर द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ ऑल द थिंग्स आर डिफर प्रत्येक जिनिसर भीतर बाहर संपूर्ण अलगा व्हाट लाइफ अपीयर्स टू अस एक्चुअली लाइफ इज नॉट दैट जीवन बाहर को जहाँ जना पड़े वास्तव में जीवन सेटा नुहे केमिति लॉर्ड बुद्ध टोल्ड अस लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग बुद्धदेव कहले जीवन हूँ दुखपूर्ण कहीं ना बिकज ही केम अक्रॉस सम पीपुल दोज हु आर सफरिंग दोज हु आर sorrowful he came across a diseased person came across an old person came across a corpse etc and for him life appeared to be full of sorrow but in the same world we have also very jovial people very happy going people very merry making people दुनिया रे बहुत लोग अच्छा जो मानिक आनंद अच्छा ताने आम कहीपर जीवनटा केवल दुखपूर्ण बोली तेणु जीवन बाहर को जहाँ जना पड़े वास्तव में जीवन से नुहे तार जीवन कौन कम तो सेकेंड स्टाजा लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम लाइफ इज नॉट ए मिथ लाइफ इज नॉट अनरियल ऑन द अपोजिट हैंड इट इज रियल जीवन हूँ वास्तव अवास्तव नुहे स्वप्न सांगे आम तुलना करें इट इज अर्नेस्ट इट मस्ट बी टेकन सीरियसली एंड ग्रेवली आम जीवन को हाल्का भाव ग्रहण करा नहीं जीवन हूँ वास्तव एवं जीवन हूँ गांभीर्यपूर्ण वी मस्ट टेक इट सिंसियरली एंड सीरियसली एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल यू सी व्हाट इज लाइफ द period between birth and death is called life. The aim of life is not getting into the earth. The aim of life is not getting a burial death. मनुष्य जीवन जो जीवनटा कि जन्म और मृत्युर मध्यवर्ती समय को कहा जाए जीवन से जीवन लक्ष्य समाधि प्राप्ति नुहे आम जानी कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड मानव जीवन नुहि केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड वी कैनॉट कैलकुलेट द लॉन्जेविटी ऑफ ए पर्सन्स लाइफ जस्ट बाय काउंटिंग हाउ मेनी इयर्स हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मिनिट्स दैट पर्सन लिव्ड जड़े लोक केते मिनिट केते घंटा केते वर्ष बंचिला आम से अनुसार से जीवन आयुष को कंपेयर करिपरिबा नाही ताको ग्रहण करिपरिबा नाही तेणु जीवन लक्ष्य कौन नुहे द एम ऑफ लाइफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ आफ्टर डेथ वी आर क्रिमेटेड वी आर बर्न्ड टू एशेस और वी आर गिवेन ए टूम आम मला परे आमको आमर डेड बॉडी को भस्म करा होची पोड़ी दिया होची कि आमको माटी तले पोती दिया होची समाधि दिया होची जीवन लक्ष्य कोनोसी समाधि प्राप्ति नुहे dust thou art to dust thou returnest here again there is a reference to Bible and the same reference we can find also in our Bhagavad Gita प्रत्येक रिलीजियस स्क्रिप्चर रे प्रत्येक धर्म ग्रंथ रे आम यही प्रकार सब प्रसंग पाइबा रेफरेंस पाइबा कौन डस्ट दाउ आर्ट यू सी यूज ऑफ ओल्ड वर्ड्स दाउ आर्ट दाउ मीन्स यू in modern English thou means you and art means are dust you are to dust you returnest return you returnest old English word that means according to Bible according to the Gita the body of any human being any animal is made of 5 elements जे कौन सी जीवर शरीर 5टी उपादान गढ़ा कौन से गुड़ा सब खीच अप तेज मरुत व्योम माटी पानी पवन आकाश एवं उताप नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस बॉडी इज सॉइल आम शरीर जो पंच महाभूत को लेकिन गढ़ा शरीर ता भितर प्रमुख उपादान हूँ माटी
And when a person dies, what happens? The earth-born body, the body of a human being which is made of soil, made of dust, after death, that human body made of soil returns back to soil again. तेणु ये माटी घट दिने मिसिबो माटी जोरा कहुचे तामाने बॉडी डिकम्पोजेस शरीर विघटन हुए द डिफरेंट एलिमेंट्स अगेन रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल एलिमेंट्स आम शरीर माटीटा बाह्य माटी सहित मिसिज शरीर थिबा उताप बाह्य उताप सहित मिसिज शरीर पानी अंश सेटा पानी मिसिब एटसेट्रा एटसेट्रा तेणु एठी इवन इफ वी टेक इट फिलोसफिकली देयर इज नो डेथ टू आवर बॉडी मनीष शरीर मध्य मृत्यु नाही कहीं लिखाई रिटर्न्स बैक दिस बॉडी व्हिच इज मेड ऑफ सॉइल अगेन मिक्सेस एंड मिंगल्स इन द सॉइल यही शरीर जोरा कि माटी तैयारी से माटी तैयारी शरीर पुणी माटी रे मिसी जाए सेटा नष्ट हुए नाही एंड डस्ट दाउ आर टू डस्ट दाउ रिटर्नेस्ट was not spoken of the soul and this line your body is made of earth, your body is made of soil and this earth born body returns back to earth again. It has nothing to do with our soul. That means body is subject to decomposition, body is subject to return back to soil again, but this soul is immortal. It is indestructible, it has no decay, no destruction. जोटा कहुई माटी घट माटी मिसीज से आत्मा विषय कहुई नहीं जे आत्माटा माटी मिसीज कहुई नहीं आत्मा को आम समाधि दबा इट इज इम्पॉसिबल नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल तेणु हियर द पोएट पोजेस कॉन्ट्रास्ट सब जगह देख लाइफ not an empty dream, life is real, life is honest, what things appear outwardly they are not actually so. सबू लाइन देख कंट्रास्ट रही सबू लाइन जस्ट अपोजिट आइडिया गुड़ाक दिखाई ये सेमती बॉडी सहित सोल रही सोलटा अविनश्वर सेटा हूँ अमर किंतु शरीर नश्वर सेटा माटी सहित माटी मिसी आम से माटिया कोई शरीर बोली कहवानी व्हेन इट हैज ए स्पेसिफिक कंपोजिशन आम तो गोटे बॉडी बोली कहते तेणु ये व्हेन ए पर्सन डाइज हिज बॉडी इज गिवेन ए बुरियाल हिज बॉडी इज गिवेन ए टोम हिज बॉडी डिकम्पोजेस इट हैज नथिंग टू डू विथ द सोल ऑफ दैट पर्सन जिते आम कौन सी लोकर मरवा कथा कहते तार शरीर विघटन कथा कहते शरीर को समाधवा कहते से क्षेत्र में आम आत्मा विषय किसी कहूना अर्थात आत्मा आउ शरीर पूरापूरी अपोजिट थिंग्स अलग जिनिस ओके कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे नाउ इफ द एम ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ यदि जीवन लक्ष्य समाधि प्राप्ति नुहे then what is the aim of life is the aim of life getting enjoyment and feeling sorry ताले यदि जीवन लक्ष्य समाधि प्राप्ति नुहे जीवन लक्ष्य मृत्यु नुहे ताले जीवन लक्ष्य कौन सुख दुख अनुभव करिबा नो द पोएट सेज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सरो these are not the aims of life is our destined end or way destined pre-decided sometimes we say I am destined I am fated to be happy live happily or to be sorry बेले आमको आज मो भाग्य रे लिखाई दुख पाइबा मो भाग्य रही सुख पाइबा देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट से भलिया किसी नाही सुख पाइबा दुख पाइबा these are not a predestined they are not a pre-decided they are not fated and enjoyment of a sorrow
enjoyment of happiness, these are the outcomes of our deeds. If we are doing good deeds, then we are happy, and if we are doing wrong deeds, then we are unhappy. So, these are not pre-decided. Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way. End means aim of life. Way means the method of living. That means we should not keep an objective, we should not keep an aim to be happy or to be sorry, and accordingly we should not do work. आमे जीवन लक्ष्य सुख किंबा दुख पाइबा उद्देश्य कौन सी कर्म करवा उचित नुहे। ताले कौन करवा? व्हाट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी आवर एम? टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। दिस इज द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ। एटा हो जीवन वास्तव लक्ष्य उद्देश्य कौन? टू एक्ट, टू वर्क। नाउ इनस्टेड ऑफ स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग, सोईकी स्वप्न देखा परिवर्ते आम कौन करवा? वी हैव टू रिमेन अवेक, वाचफुल, कॉन्शियस, अलर्ट एंड एक्टिंग। किंतु जीवन लक्ष्य कौन? कर्म करवा। कहीं कर्म करवा? We have to work incessantly, we have to work consistently because of only one reason. What is that? For steady improvement, for consistent development. What we are today, we have to find us further than today. We have to find us in a better way. आज आमे जहाँ अछंती आसंदा काली जेमिति आउ टे उन्नत हवा, टे बेटर हवा, आउ टे भल रहिबा, दैट इज द ट्रू एम ऑफ लाइफ एंड दैट इज व्हाई टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। व्हाट वी आर, लाइफ इज ए जर्नी। व्हाट वी आर टुडे, से सपोज वी आर rich, then we have to work harder so that we will become richer in future. Suppose we have secured 60% of marks in the examination, we have to work harder so that our percentage of mark will be improved. Suppose we are weak of health, we have to improve our health. जो अवस्था में अच्छी से स्वास्थ्य हो, धन हो, शिक्षा हो, योग्यता हो, अभिज्ञता हो, जहाँ अच्छी आमे एमिति कर्म करिबा जहाँद्वारा कि आमर आगामी कालीटा आज ठारू टिके उन्नत हम। ओके, इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। नाउ दिस इज द रियल एम ऑफ लाइफ। द एम ऑफ लाइफ इज नॉट टू ईट एंड डाई। The aim of life is not to get a burial. The aim of life is not to feel sorry or to feel joy. The aim of life is not to sleep and dream. What is the true aim of life? The true aim of life is to work hard so that we bring about a betterment in our present situations. तेणु यहाँ हूँ जीवन वास्तव लक्ष्य। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड द नेक्स्ट एपिसोड विल कंटिन्यू डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ओके, थैंक यू ऑल।